I feel that answer writing is the heart of UPSC. At every stage, they test a different ability. Prelims mein, they test your factual knowledge. Mains mein, they test how you write. And interview is all about how you speak. So for mains, I think answer writing is the boss. Answer writing is to be done in two parts in my opinion. One is towards the beginning of your preparation. So if someone starts preparing notes after reading a book, so they would write a lot of points. Almost the entire book would come out. But if you force someone to write an answer, a 3-hour paper, in that topic, the person would realize that no matter how big my content is, let's say Africa's colonial history in world history, that's a topic. If I ask a person to write a note, they can write 3 or 4 pages. But a maximum number of questions that can come from that topic is a 15 marker in the final exam. And the maximum, and that would also have subparts. So the maximum number of points you can write is 5 points. So that means writing 3-4 pages of notes is useless. You should only write 5 critical points there and move on. So that also makes your job easier. So for the purpose of understanding what sort of content is needed, you should write a couple of exams in the beginning. So that will help you to consolidate your note making and your understanding part in the main exam. So once that is done, I don't think there is any need for answer writing. And once you have covered 80 to 90% of the syllabus, in a good way, that you have understood everything conceptually, you retain a lot of material. At that point, I think answer writing helps you to evolve a structure to the answer. Mostly, people, the way to write answers in universities and the way of writing answers for civil service exams is a bit different. So, understanding the importance of structuring and understanding the importance of bringing in definition, data, etc., drawing maps, etc., comes only with answer writing. So towards the final part also, answer writing is extremely critical. Yes, so I was writing one answer every day from June 2017 when I left my job. This was because in the vision course we had assignments every day, we had those mini mains apart from the mains test series. So I wrote all of them. So at least one GS answer every day was what I was writing for almost 3 years. अगर आप regularly answer practice करते हैं तो आपका improvement तभी आता है. तो this weekly or daily wala thing should be replaced with regular. That interval you have to decide based on your strengths, अपनी जो आपको सूट करे, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. Exactly, हाँ. तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा. तो ये कोई आई डोंट थिंक ऐसा कोई मंत्र है कि आप शुरू करो तो पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करने लगो. क्या लिखेंगे आप? बट ये कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा और आपको ये करना तो पड़ेगा ही at some point of time. I would also recommend the aspirants that whenever they're even drawing a diagram for geography, for instance, to explain something, always label the diagram properly, explain what you have drawn, and also like number it also, like figure 1 so and so that when you're referring to it in your answer as well, you can say as seen in figure 1. So that would make it easy for the examiner. एथिक्स में जो मेन करो, जो आपका आंसर्स हैं, जो आंसर राइटिंग है, वो थोड़ा पर्सनलाइज होनी चाहिए. पर्सनलाइज इन द सेंस इट शुड नॉट शो द बुकिश आंसर. इट शुड नॉट बी लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी आंसर कि आपने कहीं से रट्टा मारा और लिख दिया. सो एथिक्स, बिकॉज एथिक्स आर रियली बहुत पर्सनल होता है, तो वो द एग्जामिनर वांट्स टू नो अबाउट यू. एथिक्स के जो आंसर हैं दैट शुड बी शो, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखा के लाना चाहिए. तो जैसे कि मेरे केस में मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो इन द सेंस दो आई एम इंट्रोवर्ट बाय नेचर, बट मेरा एक्सप्रेशन जो एथिक्स के पेपर में था वो मैंने उतना, जो मेरा ऑनेस्ट, जो मुझे लगा कि आई शुड फील दिस, आई रोट दैट डाउन एंड दैट रियली हेल्प मी. वो बहुत मैकेनिकल आंसर नहीं लगा. तो जो भी लोग जिनको लगता है कि एथिक्स में ज़्यादा मार्क्स, और केस स्टडीज़ ऑल्सो, केस स्टडीज़ में थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. आई थिंक केस स्टडीज़ आर मोर स्कोरिंग ऑल्सो, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ. तो आप स्टार्टिंग में ही ऐसा करिए कि आप डेली एक केस स्टडी लिख लीजिए, उसमें मज़ा भी आता है. यू फील दैट उसमें इमेजिन करवाते हैं, कंसिडर योरसेल्फ एज SDM हियर, DM हियर. सो इट्स ऑल द वे मोर एक्साइटिंग फॉर मी. आई ऑलवेज यूज्ड टू इन दैट सिचुएशन व्हाट विल आई डू. सो आई रियली वाज वेरी वेरी कीनली इंटरेस्टेड इन सच सिचुएशन, रिएक्शन, क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. सो
सो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोच के जितनी भी आपको लगता है कि आपको जितनी नॉलेज है और आप जो करेंगे, तो उसमें जो आपको लग रहा है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोच रहे हैं, आप ये करेंगे तो क्यों करेंगे. तो द केस स्टडीज नीड्स टू बी वेरी एक्सप्रेसिव इन द सेंस कि एग्जामिनर को आपका थॉट प्रोसेस समझ में आए. Every day for 15 minutes, I used to do one case study. जितनी आप केस स्टडी करेंगे उतना ही आपको अलग अलग जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. So when you practice the case studies, only then you would realize ki, what else can you write in that. And secondly, for ethics specifically, unlike all my other GS papers, I didn't write my answers in points. Ethics एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको थोड़ा लैंग्वेज में फ्लो चाहिए. So I used to write small paragraphs. I thought that would really work for me. And how did I get to know about this? By doing the Vision IS names test series. तो उससे जो मुझे फीडबैक मिला, मुझे लगा कि हाँ ये मेरा जो पॉइंट वाइज लिखने का स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट वर्किंग. सो इट्स अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल दैट यू हैव टू डू. सो आई स्टार्टेड राइटिंग इन शॉर्ट पैराग्राफ्स फ्रॉम द फीडबैक दैट आई रिसीव. एंड जब आप बार बार टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देते हैं, एक आपको और फायदा होता है कि आपको अलग अलग तरीके आप डिस्कवर करते हैं जिससे आप लिख सकते हैं. तो एथिक्स में बिफोर आई वाज अपियरिंग फॉर द पेपर, आई हैड डिसाइडेड कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि what are the stakeholders in this particular case. So for stakeholder question, I'm going to make a pie chart. It looks really nice. It looks really appealing to the examiner. So ऐसे innovative चीजें आपको तभी आएंगी जब आप पहले से practice करेंगे. So to all the aspirants who are watching me right now, I would suggest that ethics को आप at least those 15 to 20 minutes जरूर दें after your prelims is over. It doesn't take much time. If you have your own notes ready, very concise. सिलेबस पे जस्ट स्टिक टू द सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं. यू डोंट हैव टू रीड एनी बिग बुक्स फॉर एथिक्स, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज, कोई मोटिवेशनल स्टोरीज जो आप देखते हैं, यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम एपिक्स लाइक महाभारत, रामायण, इफ यू कैन कोट देम इन योर एग्जाम. These things, if you have written them in your notes, then only you will be able to produce them in the actual paper. So ethics पे ये मेरा फोकस था कि मेरे नोट्स रेडी थे, मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड थी. And I think that is why I could finish my paper on time. What I did here was I tried to do more with fact enriching. Like I extensively used SDGs. Like I focused a lot on my conclusion, like how to end on a positive note, an optimistic note, how to use SDGs or some of the upcoming schemes or some of the successful things. And even I noted down like where India ranks, like the Transparency International brings the corruption index and those ease of doing. So I tried to start my introduction with that. So these are the enriching things that I did. Moreover, I broke my answer into certain sub parts. Like that is how, like, to address directly the question and to not digress from it. Approach to answer writing, one, I would say I use the common introduction, body, conclusion format only, and I tried to use as many facts, as many statistics, as many committee names, committee recommendations, as many judgments, as many things from the economic survey or from the budget or from Niti Aayog documents, as much as I could in the body of the answer. I wrote in the points format only, and apart from that, for the conclusion, I tried to be optimistic and finish in such a way that the conclusion was like a way forward. If I wasn't writing way forward in the body, my conclusion was 2 lines of maybe way forward. Or if I had written way forward in the body itself, it was just a summary of that way forward.